हेलो गाइज, लगातार आप ब्लॉग देख रहे हैं हमारे। और आज की इस ब्लॉग में मैं आप सभी को अपने फेयरवेल पार्टी को दिखाने वाला हूं, जो हमारी आज की 12th की फेयरवेल पार्टी मिलने वाली है योद्धा एकेडमी की तरफ से। तो आज अभी हम निकलते हैं अपने कोचिंग के लिए। वहां हम लोग की आज फेयरवेल पार्टी है 12th की, तो मिलते हैं वहीं पे। अभी देख सकते हैं मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, मौर्या स्टडी सेंटर, अपने स्टडी सेंटर से, और डायरेक्ट वहीं मिलते हैं अब एक ही बार अपने कोचिंग में, योद्धा एकेडमी, जहाँ हमारी फेयरवेल पार्टी रखी गई। मिलते हैं वहाँ पे। ये देख सकते हैं आप सभी, मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और थोड़ा सा ये हमारी विलेज का ये नज़ारा है। इधर से निकल रहे हैं और कहीं कहीं बीच बीच गली गली में आप देख सकते हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर के भी बैनर पोस्टर्स लगा हुआ है, तो उसे भी देख सकते हैं आप सभी। और ये देखिए, अभी हम अपने गाँव के मेन पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ देख सकते हैं अभी अपना पोस्टर लगा हुआ है। अभी मेरा एक दोस्त भी वेट कर रहा है, तो बार बार कॉल कर रहा है, तो थोड़ा दौड़ के जाना पड़ रहा है। अभी निकलते हैं जल्दी से। देख सकते हो कि यही मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है मेरे लिए, और भी हम लोग आज इस बाइक से निकलने वाले हैं अपने फेयरवेल पार्टी के लिए। तो देख सकते हो बाइक को टर्न कर रहे हैं और अभी हम लोग निकलते हैं अपने योद्धा एकेडमी पे फेयरवेल पार्टी के लिए। ये रहा मेरे लिए सीट, यहाँ बैठने वाला हूँ मैं, और एंजॉय भी करेंगे। फाइनली देख सकते हो कि हम अपने कोचिंग पे योद्धा एकेडमी पे पहुंच चुके हैं, और ये मेरा फ्रेंड आदर्श साथ में रिसीव करने के लिए रेडी था। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए, थोड़ा सा लोकेशन देखते हैं। ये देखिए कितना मज़ा है। और ये अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं यहाँ से। देखो मेरा फ्रेंड जा रहा है सब, अब मैं भी जाता हूँ। बाकी ऊपर में एकदम सारा चीज़ डेकोरेट हो चुका है, बस अभी निकलता है। और ये रहा हम लोग का, जहाँ पे हम लोग को फेयरवेल पार्टी होने वाली है। ये देखिए सेलिब्रेशन होने वाला है। ये देखिए An open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? वेलकम हो रहा है, और ये देख लो ये कोई चीज चल रही है।
Now tell me if I deserve this feeling. I thought that you knew that we had something special till you end up all this way. Please tell me when you left me bleeding. With a broken heart, tell me why I deserve this feeling. साफ किए हैं सभी लोग। उसके बाद फिर से एक बार हम लोग अभी आगे का कुछ कार्ड प्लेइंग कुछ गेम है उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं अभी। तो चलिए देखते हैं उधर। और क्लास 9 की बच्चियाँ हैं जो हम लोग के ये कर रहे हैं, उन सब के द्वारा हुआ है। तो देखते हैं, ये गेम शुरू हो गया है ना जी। और वहाँ पे आदर्श जा भी चुका है वहाँ पे पिक आउट करने के लिए। वेल डन ब्रो। हर कॉलेज जिंदगी का इम्तिहान होता है। वाह वाह वाह, ऐसा ही बोला यार। हाँ ठीक है, बोलिए। अरे उरे बोल बोल नया नया दूसरा लिख। ओ इन लड़कियों में क्या रखा? Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for?
बहुत मस्ती की है। और ये हम लोग का साउंड बॉक्स यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। और ये देखिए हम लोग का मेमोरी लगा हुआ है यहाँ पर। चलते हैं अब घर वापस लौटने के लिए, तो चलते हैं अब डायरेक्ट घर। Thought that you knew that we had something special till you